કરી આખરે છેલ્લા કેટલા સમયથી ચર્ચાનો અંત આવ્યો છે। પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાવાની જાણકારી આપી છે। હાર્દિક પટેલે ટ્વીટ કરીને જાણકારી આપી છે કે 12 માર્ચે રાહુલ ગાંધીની હાજરીમાં તે વિધિવત રીતે કોંગ્રેસમાં જોડાઈને કોંગ્રેસનો ખેસ પહેરશે। નોંધનીય છે કે ભાજપ સાથે બાયો ચઢાવ તો હાર્દિક પટેલ કોંગ્રેસમાં જોડાશે તેવી છેલ્લા કેટલા સમયથી ચર્ચાઓ થઈ રહી હતી। हार्दिक पटेल कांग्रेस में जोड़ावानो छे महत्वपूर्ण बाबत हाल सामे आवी रही है। हार्दिक पटेले लईने जोड़ाया पहला हार्दिक द्वारा जे ट्वीट करवामां आव्युं छे कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में जोड़ाशे अने महत्वपूर्ण बाबत कांग्रेस में ओबीसी अने पाटीदारोनुं ध्रुवीकरण पण थशे। महत्वपूर्ण बाबत हाल सामे आवी रही है। हार्दिक पटेले लईने कि हार्दिक पटेल कांग्रेस में जोड़ावानो छे तेने ट्वीट करीने आ माहिती आपी छे। अमे तो पहला थी कहता आव्या छीए, वर्षोथी कहता आव्या छीए के हार्दिक टोटली कोंग्रेसनी डिजाइन ज छे। भूतकाळमां कोंग्रेस साथे रहीने ज हार्दिके आ बधा आंदोलनो कर्या छे, समाज साथे एमणे खिलवाड़ कर्यो छे, युवानोने बहेकाव्या अने आ जे कांई धमाल एने राजकीय रीते कोंग्रेसनी डिजाइन मुजब ज करी छे। आ चूंटणीमां तो एनो विषय छे, लड़े न लड़े, पण चूंटणीमां पाटीदार समाज ज हार्दिक साथेनो हिसाब चूकतो करशे। हार्दिक भाईनी साथे साथे भारतीय जनता पार्टीना अनेक आगेवानो धारासभ्यश्रीओ पण कोंग्रेसमां जोड़ावानी वातचीत करी रह्या छे। पण चोक्कस हार्दिक भाई एक युवा नेता छे, कार्यकर छे, जेणे समाज माटे અને પોતાના લોકો માટે, ખેડૂતો માટે સરકાર સામે ખૂબ લાંબી લડત લડી છે। ત્યારે એમના જોડાવાથી ચોક્કસ ગુજરાતના જાહેર જીવનને ફાયદો થશે।